Good morning, dear friends. Welcomes to you in today's video lecture. Dear friends, we have seen the concept of demand, determinants of demand, as well as individual demand and market demand also. Dear friends, today we are going to learn about very important topic for our board examination, which is known as law of demand. Law of demand is very important as per as our board examination, as well as a student of economics, we must know the law of demand, and therefore in today's video lecture we are going to learn about detail about the law of demand. So whenever we will explain any law in economic analysis, we should go through some stages like introduction, statement of the law, explanation of the law with the help of schedule, then explanation of the law with the help of diagram. Next stage, assumptions taken for the law, and last stage to explain the law, which is called as exceptions to the law. So these are some stages which we have to follow while explaining the law of demand. Dear friends, whenever we will write the answer about the law of demand, we must go through these stages: introduction, statement, schedule, diagram, assumptions and exception. Dear friends, जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड का आंसर लिखेंगे तो हमें यह स्टेज फॉलो करते हुए जाना है, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो, स्टेटमेंट हो, शेड्यूल, डायग्राम, अजम्पशंस और एक्सेप्शन। इस प्रकार हमें इकोनॉमिक्स में लॉ एक्सप्लेन करना होता है। तो हम आज लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यदि हमें लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करना है तो उसकी पहली स्टेप या पहली स्टेजेस ये होती है कि इंट्रोडक्शन of the law. So the law of demand was first explained by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in 1890. So law of demand अल्फ्रेड मार्शल ने अपने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में, जो कि 1890 में पब्लिश हुई है, उसमें लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है. सो इट वाज एक्सप्लेन बाय अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, which was published in 1890. So this law of demand explain relationship between price and quantity demanded. So the law of demand particularly explain about the relationship between two factors, which is called as price and quantity demanded. वस्तु की कीमत और उस वस्तु की डिमांड, इनमें जो रिलेशन होता है वो रिलेशन पर्टिकुलरली लॉ ऑफ डिमांड में एक्सप्लेन किया गया है. सो यू नो दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एंड दैट इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज एक्सप्लेन इन लॉ ऑफ डिमांड. डियर फ्रेंड्स, so these are the basic information related to the law of demand, which is explained in first stage known as introduction. तो इंट्रोडक्शन ये हमारी लॉ एक्सप्लेन करने की पहली जो स्टेज है, इसमें लॉ से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन हमें देना है कि ये लॉ किसने एक्सप्लेन किया है, कौन सी बुक्स में किया है, वह बुक्स कब पब्लिश हुई है, और लॉ में पर्टिकुलरली किस बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है. ये बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लॉ शुड बी एक्सप्लेन इन फर्स्ट स्टेज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन. So law of demand explained by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in 1890. And this law of demand explained particularly inverse relationship between price and quantity demanded. Then next stage to explain the law is known as statement of the law. Particularly statement of the law is the central idea of the law. स्टेटमेंट ऑफ द लॉ जो होता है वह किसी भी लॉ की सेंट्रल आइडिया कहा जाता है. यह स्टेटमेंट ऑफ द लॉ लिखते समय
हमें जिसने लॉ एक्सप्लेन किया है वह अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ एक्सप्लेन करते समय जो वर्ड उसने यूज किए हैं वी हैव टू यूज सेम वर्ड यूज बाय अल्फ्रेड मार्शल एज ए स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. So you know that law of demand is explained by Alfred Marshall in his book Principles of Economics. So we have to use the word which is used by Alfred Marshall as a statement of the law. So according to Alfred Marshall, other things being equal, higher the price of commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, larger is the quantity demanded. So according to Professor Alfred Marshall, other things being equal, यदि अदर थिंग्स में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है, इट मीन्स इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी वस्तु की कीमत जब बढ़ती है तो स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, उस वस्तु की कम मात्रा डिमांड की जाती है. सो हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. एंड second part of the law is lower the price of commodity, it means when price of the commodity decreases, so lower the price of commodity, larger is the quantity demanded, it means more units of the commodity will be demanded, so larger is the quantity demanded. But when lower the price of commodity, if price of the commodity is decreases, then more units of the commodity will be demanded, so larger is the quantity demanded. मित्रों, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते समय हमें अल्फ्रेड मार्शल ने जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल वही स्टेटमेंट हमें लिखना है, उसमें चेंज करने की गुंजाइश हमें नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर the price of commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, larger is the quantity demanded. So it can be explained in another word also. So in other word, other factors remaining constant. So you know that other factor means the assumptions taken by Alfred Marshall to explain the law is called as other factors. So there are many assumptions taken by Alfred Marshall as a assumptions. So these are many factors like prices of substitute and complementary goods, population of the country, natural condition, then government taxation policy. These are many factors. If it is remaining constant, so other factors is remaining constant, and then if the price of commodity rises, if other factor is remaining constant and if the price of commodity rises, other factor constant होने के बाद यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो डिमांड फॉर इट फॉल्स, इट मीन्स लेस यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इज राइजेस, एंड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, यानी कि वस्तु की कीमत जब कम होती है, then demand for the commodity is rises, it means more units of the commodity will be demanded, but when price of the commodity is false. So according to these two statements we can conclude that there is an inverse relationship between price and quantity demanded. So we have to learn the statement of the law. So generally this statement of the law explained by Alfred Marshall explain that there is an inverse relationship between price and quantity demanded, यानी कि other things में किसी भी प्रकार का चेंज यदि नहीं होता है तो कीमत यदि वस्तु की बढ़ती है तो उस वस्तु की कम डिमांड की जाती है, और यदि वस्तु की कीमत कम होती है तो वही वस्तु की डिमांड ज़्यादा मात्रा में की जाती है. तो इस प्रकार वस्तु की कीमत और वस्तु की डिमांड इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, और वह इनवर्स रिलेशन लॉ ऑफ डिमांड में एक्सप्लेन किया है. सो देन वी हैव टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट law of demand explain inverse relation between price and quantity demanded. So inverse relation means when one factors is decreases then other factor is increases. So generally when price of the commodity increases then less units will be demanded. So price increases,
quantity demanded will be decreases. In other words, when price of the commodity decreases, then more units of the commodity will be demanded. So price increases, then less units will be demanded, and when price decreases, then more units will be demanded. So this law of demand explain inverse relation between price and quantity demanded. So law of demand can be explained in the form of function also. So functional relation between price and quantity demanded can be explained like demand of x is a function of price of x. So demand of x is a function of price of x. So x is a commodity and D for demand. So demand of x is a function of price of x, यानी कि किसी x वस्तु की डिमांड यह एक फलन है वही x वस्तु की कीमत का, यानी कि डिमांड इज डिपेंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. Demand is depend on price of that particular commodity, and therefore demand of x is a function of price of x. So in this function dx denotes demand for x commodity. X is a commodity and dx means demand for x commodity, यानी कि x वस्तु की डिमांड. Then f denotes functions and px means प्राइस ऑफ x कमोडिटी, यानी कि किसी x वस्तु की कीमत. इस प्रकार किसी x वस्तु की डिमांड वह x वस्तु की कीमत का फंक्शन है. सो देन नेक्स्ट स्टेज टू एक्सप्लेन द लॉ इज नोन एज एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल. एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल. सो इट इज द डिमांड शेड्यूल. इसे हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं. ये डिमांड शेड्यूल में दो कॉलम है. So there are two columns in demand schedule. First column which indicates price of the commodity per kg, and second column indicates quantity demanded of the commodity in kg. Suppose apple is our commodity. Suppose apple is our commodity, and when price of apple is 50 rupees per kg, when price of the apple is 50 rupees per kg, then how many kg of apple is demanded? Only 1 kg apples will be demanded. Suppose price of apple is decreases from 50 to 40. As a result, quantity demanded of apple will be increases. It means 2 kg of apple will be demanded when its price is 40. So then if price is decreases one more time, it means if price falls, यानी कि वस्तु की कीमत कम होती है 40 से 30 तक. एज ए रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर विल बी इंक्रीजेस फ्रॉम 2 kg टू 3 kg. उस समय वस्तु की डिमांड ज़्यादा होती है. और एक बार यदि वस्तु की कीमत यानी कि एप्पल की कीमत 20 रुपीज़ पर kg तक कम होती है तो यहाँ पर एप्पल की डिमांड 4 kg तक बढ़ती है. और जब एप्पल की कीमत केवल 10 रुपये प्रति kg पर kg होती है तो उस समय एप्पल की डिमांड 5 kg हो जाती है. इट मीन्स व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिक्रीजेस फ्रॉम 50 टू 40, 30, 20 एंड 10, एज ए रिजल्ट वस्तु की डिमांड रिस्पेक्टिवली बढ़ती है, जैसे कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg एंड 5 kg. इट मीन्स व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीजेस. इन अदर हैंड, सपोज हम ऐसा सोचते हैं कि यदि वस्तु की कीमत केवल 10 रुपये है, यानी कि एप्पल की कीमत 10 रुपये पर kg है, तो उस समय एप्पल की डिमांड है 5 kg. नाउ इफ प्राइस ऑफ द एप्पल इज इंक्रीजेस फ्रॉम 10 kg टू 20 kg, एज ए रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल विल बी डिक्रीजेस फ्रॉम 5 kg टू 4 kg. Suppose price is increases 30, 40 and 50, then quantity demanded respectively decreases 3 kg, 2 kg and 1 kg. इस प्रकार यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है 10, 20, 30, 40 and 50, as a result quantity demanded of the commodity कम होती है 5 kg, 4 kg, 3, 2 kg and 1 kg respectively. इस प्रकार ये डिमांड शेड्यूल से हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है, ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इज फॉल्स. तो उस समय वस्तु की कीमत कम हो जाती है,
जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि एप्पल की कीमत 50 रुपये पर केजी होती है तो ओनली 1 kg ऑफ एप्पल विल बी डिमांडेड। यदि वही एप्पल की कीमत 50 kg से 10 रुपीज़ पर केजी तक कम होती है तो उस समय एप्पल की डिमांड 1 kg से 5 kg तक बढ़ती है। इस प्रकार यह एप्पल की डिमांड पर्टिकुलरली एप्पल की कीमत पर डिपेंड होती है। यदि एप्पल की कीमत कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। यदि एप्पल की कीमत 10 रुपये से 50 रुपये तक बढ़ती है तो रिस्पेक्टिवली डिमांड फॉर एप्पल कम होती है 5 kg से 1 kg तक। इस प्रकार ऑन द बेस ऑफ दिस डिमांड शेड्यूल वी कैन कंक्लूड दैट इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स देन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इंक्रीजेस और राइजेस, and if price of the commodity is rises, then quantity demanded of commodity will be decreases or falls. It means there is inverse relation between price and quantity demanded. How many units of the commodity will be demanded is related with changes in price of that commodity, and generally there is inverse relation between price and quantity demanded. Dear friend, next stage to explain the law is explanation with the help of diagram. So it is also one of the most important stage to explain the law. So here we have to convert our demand schedule in the form of diagram. यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमारा डिमांड का शेड्यूल डायग्राम के रूप में कन्वर्ट करना है। You know that there are 2 columns in our demand schedule. One denotes price of commodity and another is quantity demanded. So in the same way, while we will explain with the help of diagram, price of the commodity will be measured on y-axis, and then quantity demanded of the commodity will be measured on x-axis. 0 or O is our origin point. So here, while we will measure price of the commodity on y-axis, so smallest digit should be near to 0. So 10, 20, 30, 40 and 50. In the same way, while we will measure quantity demanded of the commodity on x-axis, smallest digit should be near to 0 on x-axis also. So here y-axis indicates price of commodity and x-axis indicates क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमने वस्तु की कीमत और एक्स एक्सिस पर हमने वस्तु की डिमांड मेजर की है। सो यू नो दैट व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 50 रुपीज पर केजी देन ओनली 1 kg ऑफ एप्पल इज डिमांडेड। देन व्हेन प्राइस इज 40 kg देन 2 kg ऑफ एप्पल इज डिमांडेड विच इज शोन हियर। सो देन व्हेन प्राइस इज डिक्रीजेस बिकम 30 kg then quantity demanded of apple is 3 kg which is denotes here. So it is the point which shows price 30 rupees and 3 kg of apple. When price of the apple is 20 kg then quantity demanded is 4 kg. So it is the point which shows 20 rupees price and 4 kg demand, and it is the last point which show 10 rupees per kg price on y axis and 5 rupees 5 kg of demand shown on the y. So these are the points, these are the various point which shows quantity demanded at each price of the commodity. तो यह वह पॉइंट है जो कि अलग अलग कीमतों पर वस्तु की कितनी मांग की गई है वह डिनोट्स करते हैं। तो यहाँ पर 50 रुपीज़ जब वस्तु की कीमत होती है तो डिमांड 1 kg, 40 रुपीज़ प्राइस पर डिमांड है 2 kg, 30 रुपीज़ प्राइस पर डिमांड है 3 kg, 20 रुपीज़ प्राइस डिमांड 4 kg एंड व्हेन प्राइस इज 10 रुपीज़ पर केजी देन डिमांड है 5 kg। इस प्रकार अलग अलग कीमतों पर वस्तु की जो डिमांड है वह डिमांड डिनोट्स करने वाले पॉइंट्स यदि हम उन सबको एक लाइन में यदि जुड़ा देते हैं तो वी मे गेट डिमांड कर्व। When we will join all the points which shows quantity demanded at each price, then we may get one curve which is called as demand curve. इस प्रकार हम सभी पॉइंट को यदि एक लाइन से जोड़ देते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है जिसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आप यह डिमांड कर्व का स्लोप, सो इट इज द डी इज आवर डिमांड कर्व। यदि हम यह हमारे डिमांड कर्व का स्लोप देखते हैं तो हम यहाँ पर बता सकते हैं
कि इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो डी डी इज आवर डिमांड कर्व एंड इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. देखिए इसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड है, और वो भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आपको यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है. तो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डी डी इज अवर डिमांड कर्व. सो व्हाई इट हैज निगेटिव स्लोप, इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट इट हैज निगेटिव स्लोप. इसका स्लोप ऋणात्मक होता है, यह डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी demanded. Why it has negative slope? Because it explain inverse relationship between price and quantity demanded and therefore it is downward sloping from left to right. इस प्रकार वस्तु की कीमत और उस वस्तु की डिमांड इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होने के कारण हमारे डी डी यह डिमांड कर्व का स्लोप निगेटिव होता है या यह डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है. सो इन दिस वे वी हैव एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ diagram also. Dear friends, I have confidence that you have taken an idea about the law of demand, so which is most important for our board examination. Now dear friends, we will stop here. Thank you so much. Thanks once again.